Students, am I audible to you? Yes, ma'am. Okay, let me take the attendance. Pranat Kumar. Pranat Kumar. Kumar Utsav. Kumar Utsav. Chelukaya. Yes, ma'am. Present, ma'am. Okay. Swati Singh. Swati Singh. Maisan Singh. Maisan Singh. Amritabha Datta. Amritabha Datta. Ayush Raj. Ayush Raj. Priyanshi Moria. Priyanshi Moria. Yamini Sharma. Yamini Sharma. Prerna Shandilya. Prerna Shandilya. Okay, we'll start with the class and simultaneously I will be taking the attendance also. I'll be marking the attendance. Now, Namrata Upadhyay. Present, ma'am. Okay, Namrata, can you see the slides? Yes, ma'am. Okay, so today we would be studying about the market linkage. That is how you can link the farmers. What are the different modes through which the farmers can be linked to the market, both the direct method as well as the indirect linkages. Okay, so first we would be studying about what are the major problems market system. Can you see this slide? Ma'am, the first slide is visible to me. Yes, ma'am. Yes, now is it visible? Yes, ma'am. Constraints associated with the indirect tradition agricultural markets. The movement of the produce from the farm to the ultimate retail outlets or consumers through the traditional supply chain faces a number of constraints, and farmers are at the mercy of the middlemen and commission agents. In this market, intermediaries exist at a various levels between the farmers and consumers and exploits farmers through malpractices and weighing, handling, and payments. A large number of small farmers are unable to effectively bargain for better price in the wholesale market. The farmers get low price for their produce, whereas the consumers pay higher prices for the produce. Overall, there is increase in the gap between the producer and the consumer prices. Okay, so I think it must be clear to you that what are the major problems which is associated with the indirect or the traditional agriculture market, because there are so many number of middlemen and the which we call as the bicholia between the farmers and the consumers. Okay, so we call them as the middlemen. They can be any commission agents or any type of the intermediaries which exist at the various levels. So what they do is they generally exploit the farmers through they follow through various malpractices, like in weighing में वो गड़बड़ कर सकते हैं, then in handling and making the payments also. And जो major जो disadvantage है, because a large number of these, they are basically small farmers are present in large number, and they are at the mercy of that middleman.
so they are unable to bargain with them for the better price. So जो उनको price वो लोग offer करते हैं these middlemen, so they are bound to take these price. So farmers, they get low price for their produce, but the consumers, these middlemen, then sell their those produce to the at the higher price to the consumers. So overall, we can say that there is an increase in the gap. There is a communication gap between the producer and the consumers also. Okay, now, so what is the need for linking the farmers directly to the market? Next, Goldie Kumari. Goldie Kumari is there. Gayatri. Yes, ma'am. Okay, Gayatri. Can you see the slide? Yes, ma'am. Needs for Okay. linking farmers directly to market. The main purpose is to protect the farmers from exploitation of intermediaries and traders, and to ensure better prices for the produce, to facilitate the direct contact between the farmers and consumers, to make the timely payment for the produce sold, and to increase the farmer share in consumer rupee. Yes. So I think this must be clear, all the points. They're very well self-understanding, because the major aim जो है ये क्यों इसकी जरूरत पड़ी कि farmers को directly market से link करें, to protect the farmers from the exploitation. ठीक है, तो farmers को protect करने के लिए from the intermediaries and all these traders. So और इसके अलावा और क्या इसका जो benefit है कि it ensures the better prices for the farmers to get whatever they are producing in the field, so they will get the better prices. So by facilitating the direct contact between the farmers and the consumers, and they also get the timely, जो उनको timely payment हो जाता है for their produce they are selling it. Okay, so overall in turn this will help in increase in the farmer share. तो farmers को ज़्यादा benefit होगा, they will be able to get the better price for their producers in the market. Okay, now we come to the direct marketing system. Okay, Harshvardhan. Harshvardhan is there. Yes. Ma'am, the indirect marketing system, the farmers directly come in contact with consumers and come to know the consumer's requirement. Some of the direct marketing initiatives give technical know-how to the farmers about the agro-technology of crop cultivation. Through these, farmers become aware of modern methods of cultivation which ensures better yield. In this system, farmers use crates, weight machines, storage facilities, etc. for their produce, which reduce post-harvest process and cost. Okay. So direct marketing system में क्या होता है कि जो आपके farmers है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, the farmers they come in direct contact with the consumers. तो जो भी consumers की requirement है, वो directly farmers को they get to know and they make the produce according to the consumers need or the requirement. ठीक है, तो कई बार इसमें एक ये भी benefit होता है कि the farmers they get the technical know-how also. The consumers, sometimes the consumers are the big industries mostly, so they also provide the technical help to these farmers. तो वो जो भी improved agro technology है उस particular crop की, they also provide all the facilities to the farmers. So farmers they become aware of the modern methods of the cultivation. तो उससे क्या होगा कि उनकी जो yield होगी वो भी improve होगी, better quality की crops produce होंगी. इसके अलावा जो है farmers they can use the crates instead of those traditional methods of weighing which are very faulty, and the farmers they come to they become aware to use all the modern methods like weighing machines should be proper, storage facility should be there. तो उससे क्या होगा, जो उनकी post harvest losses है, जो उनके उसमें जो loss होता है, so that would also automatically would come down. Okay, and their profit would increase, profit share would automatically go up. अब benefits क्या हैं इससे direct marketing system से? Okay, Sunidhi Raj is there. Sunidhi Raj. Yes, ma'am. Okay, Sunidhi, you can read this slide.
मैम बेनिफिट्स रिलेटेड विद डायरेक्ट मार्केटिंग ये वाली? Yes. Yes, ma'am. Benefits related with direct marketing makes the marketing channel shorter. It minimizes the marketing cost, transportation cost, and maximizes farmers' share. Helps in eliminating the Intermediaries. intermediaries and encourage the distributional efficiency. It, in, it encourages the direct interaction between the producers and end consumers. Direct linking may also reduce the post-harvest losses of the produce. It satisfies the consumer through better quality of produce at reasonable price. Farmers have higher share in consumers' rupee compared to traditional marketing system. Okay. So benefits, I think they must be clear to you. ओके रिलेटेड टू द डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है कि जो मार्केटिंग चैनल है क्योंकि अब डायरेक्टली देयर आर नो इंटरमीडियरीज और एनी middlemen in between, so there's a direct linkage between the farmers and the consumer, so the marketing channel it becomes shorter and it also minimizes the marketing cost क्योंकि अगर consumers और farmers का direct interaction है तो there is no need to do the marketing. The farmers know the requirement of the consumers and they just do the production according to the consumers need. तो मार्केटिंग कॉस्ट रिड्यूस होती है, इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस होती है, कोई भी जो भी है जितनी रिक्वायरमेंट है कंज्यूमर की उसी के अकॉर्डिंग फार्मर्स विल प्रोड्यूस, so no extra amount would be used for making the extra produce. Okay, and that would also automatically it will increase the farmers profit share. Then it helps in eliminating the intermediaries, ये हमने बता ही दिया है. Then it encourages the direct interaction between the producers and the end consumers. ठीक है, ये भी इसमें डिस्कस हो चुका है. Then it reduces the post harvest losses. That also we have discussed because जो storage facilities हैं या फिर जो measurement weighing balance वगैरह है वो सबकी the farmers they become more aware of the modern techniques to use, so that also it helps to reduce the post harvest losses. So overall इससे क्या होगा, it will satisfy the consumers because they would be getting the better quality of the produce and that too also at the reasonable cost. और farmers को भी जो है they will get the higher share of their benefit as compared जो traditional वो marketing system था उसके comparison में they will get a more profitable income. Now we come to the different types of linkages. ठीक है, अब फर्स्ट इसमें आता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग. तो ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा इसका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का. नाउ वी वुड बी स्टडिंग कि इसमें है क्या. अभिनंदन इज देयर? अभिनंदन, Samreen Rubab is there? Nikita Chaudhary, Sunny Gopal. Yes, ma'am. Okay, Sunny. Can you see this slide? Yes, ma'am. Right, number 6. Okay. Different types of linkages. Contract farming or contract marketing. Contract farming is one way of linking farmers directly with the buyers. Contract farming is an agricultural production system carried out according to an agreement between a buyer and farmers. Typically, in a contract farming arrangement, the farmer commits to providing aggregate quantities of a specific agricultural product. This should meet the quality standards of the buyer and be supplied at the time that the buyer determines. In turn, the buyer agrees to purchase the product at agreed pricing conditions, and in some cases, the supply of farm inputs, land preparation, and the provision of technical advice for the crop cultivation is given to farmers. The contract may be done by parties at any time, from the start of sowing or planting to harvesting, processing, packaging, and marketing stage of the crop. Okay, so I think this must be clear contract farming के लिए. कुछ समझ में आया ये? ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें एक तो ये डायरेक्ट टाइप की लिंकेज है, तो फार्मर्स और कंज्यूमर्स के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट है. ओके, देयर इज नो मिडलमैन और इंटरमीडिएरी बिटवीन देम. इसमें क्या होता है कि एक एग्रीमेंट बनता है, देयर इज एन एग्रीमेंट अकॉर्डिंग बिटवीन द बायर एंड द फार्मर. तो टिपिकली इस एग्रीमेंट में क्या होता है, द फार्मर दे कमिट्स to provide the
पहले से ही कमिटमेंट फिक्स हो जाता है कि बायर अपनी रिक्वायरमेंट बता देता है कि मुझे कितना अमाउंट चाहिए और क्या चीज चाहिए, तो फार्मर एट अ एग्रीड प्राइस, तो प्राइस भी जो है पहले से ही फिक्स हो जाता है. ओके, एंड द फार्मर is committed to provide that specific agreed quantity of that particular agricultural product, और buyer भी जो है agree करता है कि he will purchase the product जो भी at a agreed pricing conditions जो भी उस time पे fix हुए हैं. So this is made in terms of a contract or an agreement is being signed between the two parties. So contract can be done at any time. अब ये contract जो है किसी भी time it can be done either from the start of the sowing और प्लांटिंग, जब जो है सोइंग या प्लांटिंग हो रही है उसकी, इट कैन बी डन एट द लेटर स्टेजेस आल्सो, कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे या प्रोसेसिंग या पैकेजिंग के टाइम पे भी द कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैन बी डन. ओके, okay, continue reading this also, Sunny. Coming to contract farming or contract marketing, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttarakhand, and Uttar Pradesh are the states which provide the favorable conditions for contract farming in India, with good soil productivity and yield per hectare and better irrigation facilities. Okay. So these are the name of the certain states जहाँ पे जो है contract farming के लिए बहुत conditions जो हैं they are very favorable. The government policies are such that they help in the contract farming between the farmers and the end consumers. Besides this, they also ensures that there is a good soil productivity and there is an increase in the yield per hectare. Plus, their better irrigation facilities are also being provided by the government of these states. Okay, so now we come to the what are the benefits of from this contract farming to the farmers. Farmers को क्या benefit होते हैं, सारे वही repetition है. But I would like to read them. Sahil Dash is there. Sahil Das, sorry. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Sahil, you can read this. Okay, so benefits from contract farming to the farmers: assured market and support price. It minimizes the price risk, reduces post-harvest handling losses, minimizes the mal practices during the marketing of produce, efficient, timely technical guidance free of cost, better price for produce, no middleman, gain of bulk sales instead of small lots, remunerative returns and timely payment, price assurance, ensures higher production because of better quality seeds and pesticides, reduces marketing and transaction cost, and farmer may get financial support in cash or kind. Okay, so these are certain benefits. Yes, I think there is nothing to explain in these. क्या क्या benefits हैं farmers को, ठीक है? तो now I'll move to the next slide. अब हम देखेंगे benefits from the contract farming to the buyer. Buyer को क्या benefit है? अभी हमने देखा कि farmers को क्या benefit थे. Okay, Nikita Singh. Yes, ma'am. Okay, Nikita, you can read this slide. Benefits from contract farming to the processing company or buyer. It ensures supply of quality agricultural produce at right time and at lesser cost to the company, so risk of raw material supply is minimized. It ensures that the toxicity level is reduced as per the requirement for export in case of certain crops by having a better control on production from fluctuations in market price, uninterrupted and regular flow of quality raw material. Okay, so buyers को क्या फायदा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, कि एक तो ये है कि इट विल इंश्योर कि जो कंटिन्यूस सप्लाई है जो उनको चाहिए एक्सपोर्ट, अगर वो एक्सपोर्ट से एसोसिएटेड है तो दे विल गेट द प्रोड्यूस एट अ राइट टाइम, और जो भी उनका जो प्री फिक्स कॉस्ट होगा जिस प्राइस पे पहले से ही एग्रीमेंट इट वुड बी मेड, तो उसी कॉस्ट पे इट वुड बी एबल टू गेट द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ दोस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. तो उनकी जो क्वालिटी होगी obviously it would be of better quality, toxicity level would also be reduced as per the requirement of the export,
बिकॉज जो उसमें क्या होगा, जो भी बायर या आपका कंपनी होगी, प्रोसेसिंग कंपनी, दे वुड बी just guiding the farmers in terms of the technical knowledge also and helping them कि कौन से pesticides या कौन से organic fertilizers they should be used. Okay, so there would be the better control on the production, so there would be protection from the fluctuations also in the market price. कोई भी मार्केट में चाहे कोई भी प्राइस चल रहा हो, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, लेकिन जो एक बार उनके कॉन्ट्रैक्ट में it has been decided, the price has been decided, so it will go at that price only. So there is an uninterrupted and there is a regular flow of the quality raw material. तो ये जो बेनिफिट्स है ये बायर्स को है, तो दोनों ही फार्मर्स और बायर्स दोनों को ही बेनिफिट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से। लेकिन कुछ जो है डिसएडवांटेजेस भी देखे गए हैं, पर्टिकुलरली जो है कैश क्रॉप्स जो होती हैं, तो उसमें कई बार ये होता है कि जो there may be a shift in the area from the food crops की कैश क्रॉप्स की जगह फार्मर जो है फूड क्रॉप्स ग्रो करने लगे हैं अगर, ठीक है। एंड कभी कभी क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स दे आर डिसऑनर्ड, कई बार दे आर नॉट, दे डोंट, they don't follow the whatever the rules have been set or whatever the price has been set in the contract. So बहुत कम केसेस में होता है कि वो दे आर डिसऑनर्ड इन केस ऑफ हाई लेवल ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन। अगर बहुत ज्यादा मार्केट में प्राइस है और अगर उनका प्राइस पहले से ही उन्होंने बहुत लो अमाउंट पे फिक्स कर दिया है, तो उस केस में कई बार दोनों पार्टीज में देयर माइट बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, एंड so this is the basic thing. Now we come to the second type of market linkage, that is the cooperative marketing. After the first contract marketing, second is the cooperative marketing. Okay, Balwant Kumar is there. Balwant Kumar, Chandrahas Reddy, Chandrahas Reddy, Vishal Vijay, Vishal. Yes, ma'am. Okay, Vishal, can you see the slide? Ma'am, actually, the slides are it's showing 7th slide again. 7th. You can just download it. Chandrahas, you are Chandrahas Reddy. Vishal Vijay is there. Vishal Vijay. Okay, Chandrahas, can you see the slide number 11? Yes, Chandrahas, can you see this slide? Am I audible to you? Amal Santosh is there. Yes, ma'am. Who said? Amal. 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 Okay, Amal. Okay, Amal. Can you see this slide? Yes, ma'am. Cooperative Okay. marketing. Yes, you can read it. Cooperative marketing is the system of marketing in which a group of producers join together and register themselves under the respective State Cooperative Society Act to market their produce jointly. The members also deal in number of cooperative marketing activities, that is processing of produce, grading, packing, storage, transport and finance. Okay. तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये था कि सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर एक ही कंज्यूमर के साथ डील कर रहा था, वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है। लेकिन कोऑपरेटिव मार्केटिंग में, एज द नेम इंडिकेट्स, अ ग्रुप ऑफ द प्रोड्यूसर्स दे जॉइन टुगेदर, दे कम कलेक्टिवली एंड दे जॉइन टुगेदर, और वो जाके रजिस्टर कराते हैं अंडर सम स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। हर स्टेट में जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज होता है, वहां पे वो दे हैव टू गेट रजिस्टर्ड so that they can their produce jointly.
ओके तो ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग जो है सिर्फ एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन में ही नहीं, उसके आगे भी जैसे प्रोसेसिंग अगर में इन्वॉल्व है कोई, या ग्रेडिंग में, पैकेजिंग में, स्टोरेज में, या ट्रांसपोर्ट, so anything they can deal with the number of activities. Okay, अब इसके क्या aims and objectives हैं? Okay, Doreen is there. Doreen. Chandras, can you see the slides now? Just can you see this slide number 12 now? Yes, ma'am. Okay, you can read. Aims and objectives of cooperative marketing. The broad aim of cooperative marketing society is to rationalize the whole marketing system so that it may be beneficial to the producer, strengthen the bargaining capacity of the cultivator, secure the member a better price for their produce, eliminate superfluous middlemen, provide members the needed finance, persuade the farmer to grow better quality goods, stabilize the price, develop fair trading practices, provide the facility of grading and transportation. बेसिक एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको ध्यान में रख के कोऑपरेटिव मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है। तो इसका जो ब्रॉड एम यही है कि जो पूरा मार्केटिंग सिस्टम है उसको एक रैशनलाइज तरीके से, पूरा इफेक्टिव और सिस्टमैटिक तरीके से एस्टैब्लिश करना, सो दैट अल्टीमेटली जो भी प्रोड्यूसर है या फार्मर है उसको बेनिफिट हो। ठीक है, तो उनकी जो है अगर वो इस तरीके से कोऑपरेटिव मार्केटिंग के थ्रू चलते हैं तो उसमें क्या फायदा है, तो उनकी जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है, they can bargain with the consumers at a much more confidence level, क्योंकि जब उनका कोई भी ग्रुप होगा या एसोसिएशन होगी that is registered under the respective state corporation society act के अंदर, तो उनमें automatically they would be able to bargain better price for their produce. Okay, तो इसकी और इसमें जो है कोई भी middleman it is not involved, and they can also provide the members अगर उनको किसी भी finance वगैरह की जरूरत है, so they also there is a provision to provide to help the farmers also in terms of the finance. Then it also helps persuade the farmers को भी ये लगेगा कि they would also it would be better to grow the good quality products, so they would be using the good quality of raw materials or the seeds or planting material whatever they are doing. Then it would also help to stabilize the price. जो भी प्राइस है वो पहले से ही फिक्स कर लेंगे कंज्यूमर्स के साथ, and that would also help in stabilizing in preventing the fluctuations of the price in the market. Okay, so it would develop the fair trading practice, and it can also provide the facility of grading and transportation also. अब थर्ड टाइप का जो मार्केट लिंकेज आता है दैट इज योर फार्मर्स एसोसिएशन, या फिर इसको ग्रोअर्स एसोसिएशन, या फिर इसको फार्मर्स ग्रुप भी बोलते हैं। ये क्या है, ये वुड बी सेइंग जितेंद्र सिंह रोहा इज देयर? Yes, ma'am. Okay, Jitendra, you can read this slide. Farmers associations are informal cooperatives managed by farmers themselves. A farmer interest group named FIG is a self-managed independent group of farmers with a shared goal and interest. In the last phase of the members work together to achieve this goal by pooling their existing resources, gaining better access to other resources, and to share in resulting benefits. ओके, तो फार्मर्स एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर जो ग्रुप ऑफ फार्मर्स हैं दे हैव टू गेट रजिस्टर्ड। ठीक है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अंडर दी रिस्पेक्टिव स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। लेकिन जो फार्मर्स एसोसिएशन है इसमें रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। it is actually an informal group है, it is a type of informal cooperative which is जो farmers ही अपने आप ही manage करते हैं। ठीक है, so it is a self managed independent group of farmers, और जो भी उसमें उनका एक common goal होता है जिसको लेकर वो आगे चलते हैं कि कोई भी जो भी उनका प्रोड्यूस है, कौन सी कोई भी क्रॉप है, एंड दे ऑल्सो शेयर द बेनिफिट, जो भी उससे प्रॉफिट या बेनिफिट होता है उसको सेल करके, तो वो इक्वली शेयर होता है ऑन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेसिस।
तो जिस ग्रुप में सपोज इन अ फार्मर्स ग्रुप देयर आर 8 to 10 फार्मर्स आर देयर, ठीक है, तो जिसके पास जो भी फैसिलिटी होगी, जैसे किसी के पास एग्रो टेक्नोलॉजी है उस पर्टिकुलर क्रॉप की जिससे उसकी यील्ड इंक्रीज हो, किसी के पास स्टोरेज की अच्छी फैसिलिटी है, किसी के पास जो है पोस्ट हार्वेस्ट कंडीशंस, पोस्ट हार्वेस्ट जो इक्विपमेंट्स हैं उनके रिसोर्सेज हैं, तो दे वुड जस्ट अचीव इट बाय पूलिंग देयर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। तो जो भी जिसके पास फैसिलिटीज हैं वो आपस में सब लोग इकट्ठे म्यूचुअली शेयर करते हैं, और जो भी उसका जो भी बेनिफिट या प्रॉफिट मिलता है दैट इज आल्सो शेयर्ड इक्वली। ओके, अब इसमें एक्टिविटीज क्या क्या हैं इसके अलावा फार्मर्स ग्रुप में? फर्स्ट है कि दे कंडक्ट द मीटिंग्स, ठीक है, दे ऑर्गेनाइज द मीटिंग्स वेयर दे डिस्कस अबाउट what are the common goals and objectives are there. Then they also help in information sharing, तो उनकी जो नेटवर्किंग होती है अदर ग्रुप्स के साथ, तो जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द क्रॉप्स, कैसा उसका सीड कहाँ से मिलना चाहिए, कौन सी उसकी जो है क्या हार्वेस्टिंग टाइम है, सारी इंफॉर्मेशन they are they able to share themselves. Then they conduct the field trials also. They organize the bulk selling and purchasing, जो भी अगर वो सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो वो they do it in bulk, तो उससे क्या होगा जब बल्क में वो करेंगे तो उसमें ऑब्वियसली जो है उनको प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है। Then they develop the market networks and make the market assessment, जो भी मार्केट में करंट अवेलेबल प्राइस है, जो भी फ्लक्चुएशंस चल रहा है, तो दे स्टडी द मार्केट वेल and then they develop those their marketing strategies accordingly. Then they support the individual members also, जो जिसकी अगर पर्टिकुलर किसी मेंबर की फाइनेंशियल कुछ रिक्वायरमेंट है या कोई पर्टिकुलर पोस्ट हार्वेस्ट इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो दे सपोर्ट दैट इंडिविजुअल फार्मर मेंबर also. Then they identify the technical and product opportunities and also help in technically भी help करते हैं in production and using the improved technologies. Okay, so these are the activities in the farmers group. अब जो है हम देखेंगे जो केस स्टडीज हैं फार्मर्स एसोसिएशन के, तो फार्मर्स एसोसिएशन का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, द आइडियल एग्जाम्पल इज सफल. Safal, everybody knows, you must have seen the Safal stores, okay, in the cities. So this is actually a type of the fruit and vegetable growers association. ये एक farmers association का एक classical example है. Okay, might ask someone. Akshay Gopal Sharma is there? Yes, ma'am. Okay, Akshay, you can read this. Example or case study of Farmers Association. Safal Fruits and Vegetable Growers Association. Safal village level associations promoted by the Mother Dairy Fruits and Vegetables Limited has been quite successful in linking fruit and vegetable farmers to markets. Safal was first established in 1988 to cater to the growing demand for fruits and vegetables in the metropolitan city of Delhi. At present, there are 250 Safal associations with about 20,000 farmer members in the country. This market is a move to introduce a transparent and efficient platform for sale and purchase of industry produce by connecting farmers and wholesale buyers in various markets across the country. Okay, तो सफल का ये समझ में आ गया, ये एग्जाम्पल है, और ये जो सफल जो स्टैब्लिश हुआ था ईयर 1988 में हुआ था, तो जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज की फ्रूट एंड वेजिटेबल रिक्वायरमेंट है दैट इज बीइंग मेट बाय दिस सफल. तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि एट प्रेजेंट जो है देयर आर 250 सफल एसोसिएशंस जिसमें कि अराउंड 20,000 फार्मर्स दे आर बीइंग इन्वॉल्व्ड. ओके ओके, अच्छा इसमें अभी और भी है. हेमंत सिंह. Yes, ma'am. Okay, Hemant, you can read this. This model involves an alternate marketing structure which provides a better price for the producers. Through this approach, there is an increased integration between growers, wholesalers, and retailers into the market system. The farmers associations are linked to collection centers that are equipped to
meet the specific requirement of buyers in terms of qualities, package, and weight. Growers are trained in quality management aspect, and extension services are provided for production enhancement. ओके तो जो सफल है इसका जो है ये तो इसका प्राइम एम ही है कि इट्स अ मार्केट टाइप ऑफ अ मार्केटिंग स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स, जो मेजर एम है कि बेटर प्राइस जो है आपके फार्मर्स या प्रोड्यूसर्स को मिल सके. ठीक है. सो थ्रू दिस अप्रोच there is an increased integration between the growers or wholesalers and retailers. Okay. एंड इसमें जो है ग्रोअर्स को दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन द क्वालिटी मैनेजमेंट की किस तरीके से क्वालिटी प्रैक्टिसेस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दे शुड बी फॉलोड at the field level itself. So they are also trained in that also. तो farmers association जो है they actually link these collection centers. तो farmers जो है एक ग्रुप बना लेते हैं जिसको farmers association बोलते हैं. Then they are linked to these collection centers. वहां पे जाके वो अपना collection center पे अपना जो भी produce है field का they just give them and they are equipped with the specific requirement. और उनको पता होती है कि buyers की क्या specific requirement है. तो accordingly जो है farmers उसी तरीके से they will produce the प्रोडक्ट एग्रीकल्चर जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्रॉप्स कर रहे हैं, फ्रूट्स कर रहे हैं. बेसिकली ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए है सफल, all the horticultural products. So they will meet the requirement of the buyers in terms of the quality, package and the weight. Okay, now the fourth type जो linkage है, that is the farmers producers company, that is the FPC. Okay. Mukul Bansal. Yes, ma'am. Okay, Mukul, can you see this slide? Can you No, see ma'am, this slide? but I have downloaded it, ma'am. Okay, you have downloaded it, so you can come to slide number 17. Yes, ma'am. Ma'am, it is the farmers producer. Yes, company. farmers producers company. Yes, you can read it. The concept of farmer producer company was introduced in 2002 by incorporating a new part 9th A into the company's act based on the recommendations of an expert committee led by noted economist Y.K. Alag. Alag. FPC can be formed by any 10 or more individuals, each of them being a primary producer. Any two or more producer institutions or a combination of 10 or more individuals and producer institutions. Okay. सो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में एक बहुत फेमस जो है इकोनॉमिस्ट हैं Y.K. अलग, उन्होंने जो है उनके रिकमेंडेशन पे ये एक एक्ट इनकॉर्पोरेट किया गया था इन द पार्ट 9th A, ठीक है, कंपनीज एक्ट में. सो दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2002. तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी फार्मर जो है एक फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी कैसे बना सकता है, या तो कोई भी एनी 10 का कोई भी ग्रुप जो है 10 या 10 से ज्यादा का ग्रुप में जो भी, बट उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ईच ऑफ द मेंबर शुड बी अ प्राइमरी प्रोड्यूसर, मतलब वो डायरेक्टली फार्मिंग की एक्टिविटी से जुड़ा हुआ होना चाहिए. दूसरा ये कि एनी 2 और मोर प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस, मतलब अगर ऐसे 10 या 10 से ज्यादा की अगर एक ग्रुप बन गया है तो इसी तरीके से 2 या 2 से ज्यादा के भी प्रोड्यूसर जो ग्रुप्स हैं दे कैन आल्सो मेक दिस FPC, और या फिर इनका कॉम्बिनेशन फर्स्ट और सेकंड का, कि कोई भी इंडिविजुअल्स भी बना सकते हैं प्लस द प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस भी, दोनों के साथ. ठीक है. तो अब इसमें क्या है लॉज में. Okay, Anushita Roy is there.
Anusthita Roy. Yes, ma'am. Okay, Anusthita, you can read this. Ma'am, Farmers Producer Company. Farmers Producer Company, FPC. According to this new law, only farmers, producers can be members of the FPC, and the farmer members themselves will manage this company. Paid staff can be employed to help the farmer producers run the FPC. These FPCs are promoted by the farmers, are run by the farmers, and are for the benefits of the farmers. Over the years, the surplus generated would be shared among the farmers themselves. In other words, FPC is a hybrid between a private limited company and a cooperative society. Okay. So I think this must be clear to all of you कि क्या है ये FPC. ये actually जो है farmers या producers ही they can make this company. So it is promoted by the farmers, it is run by the farmers, and जो benefit होगा they are equally divided among the farmers. Okay, so you can say that it is a hybrid between a private limited company and a cooperative society. इसमें registration कराने की कोई it is not mandatory to get registered. अब इसका जो एग्जाम्पल है, जो क्लासिकल एग्जाम्पल है फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी का, दैट इज अमूल. सो अमूल का तो सबको ही पता है नाम, इट्स वेरी फेमस. तो शुभम शर्मा इज देयर. शुभम शर्मा. श्रेया सिंह. Shreya Singh is there. Yes, ma'am. Okay, Shreya, can you see this slide? Yes, ma'am. Example of FPC Amul. Yes, you can read this. Amul was formed in 1946, a dairy cooperative based at Anand in Gujarat. Amul has spurred the white revolution of India, which has made India the largest producer of milk and milk products in the world. The Amul model of dairy development is a three-tiered structure and is set up in order to delegate the various functions. Milk collection is done at the village dairy society, milk procurement and processing at the district milk union, and milk products marketing at the state milk federation. This structure not only helps in eliminating internal competition but also ensures that economies of scale are achieved. Amul has always given assurance to the buyer about the quality and their satisfaction and sells them at a reasonable price. Amul has the best distribution channel and always ensures that the product is available to the customer whenever and wherever they want. Okay. तो ये समझ में आ गया होगा अमूल का. ठीक है. इट इज लोकेटेड, जो इसकी जो सोसाइटी है कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट इज लोकेटेड इन गुजरात, आनंद में. So it was found in the year 1946. तो जो अमूल का जो मॉडल है डेयरी डेवलपमेंट का, इट इज एक्चुअली अ 3-tiered स्ट्रक्चर, मतलब 3 लेवल्स हैं उसमें. तो पहला लेवल जो है दैट इज द विलेज डेयरी सोसाइटी. तो विलेज डेयरी सोसाइटी में क्या होता है कि जितना भी उस पर्टिकुलर विलेज से मिल्क कलेक्ट होके वहां पे इट इज बीइंग कलेक्टेड. ठीक है. जितने भी मिल्क जो डेयरी फार्म्स हैं जिनके, तो वहां से मिल्क जो है कलेक्ट करके इट इज बीइंग कलेक्टेड एट विलेज डेयरी सोसाइटी. ठीक है. वहां से फिर द मिल्क प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसेसिंग जो है इट इज बीइंग डन एट अ डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन लेवल. तो जो भी वहां से मिल्क प्रोक्योर होता है उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है. प्रोसेसिंग में जो भी उसका पाश्चराइजेशन है, ठीक है, या फिर उसकी और मेनली पाश्चराइजेशन ही होता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का. तो दैट इज डन एट द डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन लेवल. उसके बाद जो है मार्केटिंग या उसकी अगर फर्दर प्रोसेसिंग होनी है कि अगर उसका कोई भी मिल्क प्रोडक्ट्स बनने हैं, लाइक दही है या फिर छाछ है, पनीर है, चीज है, एवरीथिंग. सो इट इज बीइंग डन एट द डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन लेवल. उसके बाद जो उसकी मार्केटिंग है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की, इट इज डन एट द स्टेट मिल्क फेडरेशन. तो ये 3 लेवल स्ट्रक्चर में फंक्शन करता है अमूल का. ओके. और जो व्हाइट रेवोल्यूशन ऑफ मिल्क है, so that has been actually triggered by this Amul only.
So white revolution matlab jo India it has become the one of the largest producer of the milk and milk products in the world. Now we come to the examples कि कुछ institutional institutes ने भी काम किया है, ऐसे कुछ innovative methods develop किए हैं so that they can link the farmers directly to the market. तो वो क्या क्या initiatives हैं वो अब हम देखेंगे आप. तो first है उसमें e-Chopal. Okay, so Shikha Saxena is there. Yes, ma'am. Okay, Shikha, you can read this. Institutional innovations in linking farmers to market. e-Chopal, ITC initiative. e-Chopal is an initiative of ITC Limited, a large multi-business conglomerate in India, linking directly with rural farmers via internet for the procurement of agricultural and aquaculture products like soybeans, wheat, coffee, and prawns. The program, launched in June 2000, involves the installation of computers with internet access in rural areas of India to offer farmers up-to-date marketing and agricultural information. It transmits information, weather, prices, news, and supports market transactions online. ठीक है. तो e-Chopal you can understand कि आप जो है इंटरनेट के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आप डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हो फार्मर्स को मार्केट से. ठीक है. तो it was an initiative which was taken by this company. It is actually located at Bangalore ITC. जन को बोलना पड़ता है पूछ. Yes, Amrit Abha, just mute your mic. So this company, this e-Chopal was initiated by this ITC Limited company, which is located in Bangalore. Okay, it's and it directly helps in linking the rural farmers through the internet. तो इन्होंने क्या किया, जो ये प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ था वो जून ईयर 2000 में हुआ था. तो इन्होंने रूरल एरियाज में कंप्यूटर्स इंस्टॉल कराए विद इंटरनेट फैसिलिटीज, और उसके थ्रू जो है इन्होंने फार्मर्स को जितनी भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जो मार्केटिंग से रिलेटेड है, उनकी एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन, वेदर फॉरकास्ट है, प्राइसेस क्या है मार्केट में, so all these informations was transmitted. ठीक है. और इसके अलावा they can purchase or buy the products, agricultural products and aquaculture products also, जैसे prawns है. So they have also supported the market transactions also online. Okay, now we come to the next type of linkage, that is the direct marketing. Okay, Jaya Sharma is there. Yes, ma'am. Okay, Jaya, you can read. Direct marketing. Direct marketing or the farmers market is a system of marketing where the producers and consumers come in contact directly without the intervention of middlemen to buy and purchase produce. Direct marketing is most successful in horticultural products like fruits and vegetables, which are highly perishable compared to the field crops. Okay, actually this is just a repetition. हमने direct marketing पहले ही पढ़ ली है. Okay, so just ignore this. You know that here there is the direct linkage between the farmers and the consumers. So there is no middleman involved. अब इसके हम examples देख लेते हैं direct marketing के. That is the Ritu Bazaar. तो ये जो है एक टाइप का direct marketing system है which is practiced in Andhra Pradesh. Okay, Alok Kumar is there. Alok Kumar Gupta. Ankita Kumari. Ankita Kumari is there. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Ankita, you can read this. Ritu Bazaar. Yes, ma'am. Successful case studies of direct marketing in India. Ritu Bazaar, farmers market in Andhra Pradesh. Ritu Bazaar is one of the most successful models in linking the farmers directly to the marketing. Ritu Bazaars were introduced with a view to eliminate the middleman and arrange facilities for the farmers to sell their produce directly to the consumers at reasonable rates fixed every day. The Ritu Bazaar was initiated by Government of Andhra Pradesh in 1999.
It nearly covers 2,800 villages in the district headquarters and important cities in Andhra Pradesh. The price fixation in Ritu Bazar is through a committee of farmers and the state officer. Other essential commodities like pulses and edible oils are also sold in these markets along with fruits and vegetables at reasonable prices. Ritu Bazars have helped both the farmers and consumers as farmers get better prices for their produce since there are no middlemen in the market and the consumer get fresh vegetables at lower price compared to other markets. Okay, so I think this must be clear to all of you. ऋतु बाजार में तो इसमें जो है हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अलावा जो आपके पल्सेस एंड एडिबल ऑयल्स हैं सो दे आर आल्सो अवेलेबल. ओके, और एक जो अदर डिफरेंस है कि यहाँ पे जो मार्केट जो प्राइस है इट इज फिक्स एवरी डे ऑन अ डे टू डे बेसिस. ये इसका बेसिक जो यूनिक पॉइंट है. ओके, अब जो नेक्स्ट है डायरेक्ट मार्केटिंग का एग्जांपल है दैट इज द अपनी मंडी. तो ये जो है फार्मर्स मार्केट इट इज लोकेटेड इन पंजाब. ओके, निकिता भारद्वाज is here. हेलो Yes. मैम आलोक Yes. कुमार गुप्ता। आलोक कुमार गुप्ता. Yes ma'am. Okay, Alok, you can read this slide. Okay. Apni Mandi Farmers Market in Punjab. The Punjab Agriculture Marketing Board started Farmers Market in 1987 by the name Apni Mandi with a view to boost small farmer around cities and to provide direct access to the consumer by eliminating middlemen. Facilities, market yard space, water, etc. are provided to the farmers. This market ensure the availability of fresh fruits and vegetable and other produce to the consumer at a reasonable price and encourage the farmer to get a better share in consumers' rupee as there no any middleman functioning in अपनी मंडीज. ओके, तो जैसे ऋतु बाजार आंध्र प्रदेश में है, ये अपनी मंडी जो है पंजाब में है. ठीक है, तो ये जो है कब हुई थी सेटअप 1987. तो इसका भी यही एम है, देयर आर नो मिडलमैन इन्वॉल्व्ड. और इसमें जो अलग फैसिलिटीज हैं कि दे आल्सो प्रोवाइड द स्पेस, वाटर एंड मार्केट प्लेस टू सेल देयर प्रोड्यूस फॉर द फार्मर्स. तो वहाँ पे वो स्पेस वगैरह की सब फैसिलिटी देते हैं फार्मर्स को. ओके, नाउ आई कम टू द मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम. Okay, Nikita Bhardwaj is there. Rajneesh Singh. Pooja Nadar. Yes, ma'am. Yes, who said? I'm Rajneesh. Okay, Rajneesh, you can read this slide. Market information system. Market information system / market intelligence system. Market information services. Yes. Yes. MIS are information system used in gathering, analyzing, and disseminating information about prices and other information relevant to animal rearers, traders, processors, and other involved in handling agriculture product. It facilitates marketing decision, regulate the competitive market process, and simplifies marketing mechanism. Most of the states and union territories of India are helping the farmer and traders by providing the market information of agricultural commodities by way of publishing in the newspaper, magazine, and government bulletins, transmitting, broadcasting on the radio, TV, etc. ओके, तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली क्या है? एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें जो है सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दी फार्मर्स, प्राइसेस से रिलेटेड, रिलेवेंट टू द फार्मर्स या जो भी एनिमल रियरर्स हैं, ठीक है, लाइफ स्टॉक से इन्वॉल्व है, ट्रेडर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, हु आर इन्वॉल्व इन हैंडलिंग दी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. तो उनको सारी जो है सिस्टम गैदर करके इट प्रोवाइड्स देम. तो क्या क्या सोर्सेस हैं? दे कैन बी थ्रू द न्यूज़पेपर्स आल्सो. दे कैन गिव द इंफॉर्मेशन बाय पब्लिशिंग इन द न्यूज़पेपर्स, इन द मैगजीन्स, गवर्नमेंट बुलेटिन्स,
या फिर रेडियो और टीवी पर भी ब्रॉडकास्ट होते हैं. So it is just basically to create the awareness or disseminate the information regarding the agriculture. तो एक किसान कॉल सेंटर है that was started by the Department of Agriculture and Cooperation, Government of India ने जिसने स्टार्ट किया था. तो इसमें क्या है, there is a number that is the toll free number 1551. तो ये जो है फ्रॉम सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कोई भी फार्मर कहीं भी किसी भी कंट्री के पार से he can call at this toll free number and he can ask whatever he can ask the thing related to any agriculture knowledge. So जो भी उसकी प्रॉब्लम है regarding the cultivation से लेके processing तक, so उसकी जो it is the advice is available free of cost to the farmers. So the queries they are answered by the agricultural graduate. तो जो भी local language में है, जो he or she can just answer the queries to these farmers. ठीक है. तो ये जो किसान कॉल सेंटर है ये 21st January 2004 से it was started. Okay, so you can remember this toll free number, that is 1551. अभी जो है मार्केट इन्फॉर्मेशन के कुछ सोर्सेज हैं जो मैंने आपके इन्फॉर्मेशन के लिए इसमें इंक्लूड किए हैं, जैसे न्यूज़पेपर है, टीवी है, रेडियो है. Then there are the certain sites of Government of India, जैसे Directorate of Marketing and Inspection है, Food Corporation of India है, इनकी वेबसाइट्स भी दी हुई हैं और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन ये लोग प्रोवाइड करते हैं. सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड है, ठीक है, प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का है. सो यू कैन जस्ट, दिस इज फॉर योर रेफरेंस. तो आप ये वेबसाइट जाके यू कैन जस्ट गैदर दिस इंफॉर्मेशन. Okay, so with this we finish this topic of market linkage. I take the attendance of the rest of the students who are left. Pooja Nadar. Yes, ma'am. Okay. Present, ma'am. Okay, Tumpa Singh. Present, ma'am. Okay, Atul Kumar. Present, ma'am. Okay, Surya Pratap Singh. Surya Pratap Singh. Shayan Ali Khan. Present, ma'am. Shayan. Present, ma'am. Present. Okay. Yes, Kunal ma'am. Chaudhary. Kunal Chaudhary. Kunal is there. Megha Singh. Megha Singh. Anjali Mishra. Anjali Mishra. Moksh. Moksh. Kaushik Tyagi. Kaushik Tyagi. Yes, ma'am. Chiranjeevi. Who said Present, yes? ma'am. Present, ma'am. Chiranjeevi. Okay. Please speak out the names also. Don't interfere in between. Laiba Khan. Kaushik present. Ma'am, Mox present, ma'am. Moksh, why you didn't speak? And Kaushik also. No, ma'am. I was Ma'am, so Mox confused. present. My mic was got muted. Okay, Laiba Khan. Laiba Khan is there. No? Menka. Menka Shandilya. Acha Shri. Present, ma'am. Okay, Harish Reddy. Present, ma'am. Okay, Shri Kiran Reddy. Yes, ma'am. Okay, Nishat Apsa. Nishat Apsa. Noria Vereen. Noria. Noria is there. Bhavna Maurya. Present, ma'am. Okay, Avantika. Avantika. Manish Kumar. Manish Kumar. Abhinav Chahal. Abhinav Chahal. Tanishq Pratap Singh. Abhinav present. Okay, Abhinav. Tanishq Pratap Singh is there. Abhishek. Abhishek.
Swarna Rohit. Present, ma'am. Okay, Rohit Chauhan. Present, ma'am. Okay, Prashant Kumar. Prashant Kumar. Alok Kumar. Alok Kumar. Tanish Gupta. Tanish Gupta. Ravi Shankar. Ravi Shankar. Ravindra Reddy. Present, ma'am. Ravindra Reddy. Okay, Neha Raj. Neha Raj. Okay. Abhishek Kumar. Abhishek Kumar. Suraj Chaudhary. Present, ma'am. Suraj Chaudhary here. Okay. Amit Ranjan. Present, ma'am. Okay. Ankush Saini. Present, ma'am. Ankush. Ankush. Present, ma'am. Ankush. Ankush is there. Yes, ma'am. Present, ma'am. Okay. Alok Ranjan. Ma'am. Okay. Gaurav Jha. Present, ma'am. Okay. Abhishek Kumar Singh. Present, Abhishek ma'am. Kumar. Okay. Abhay Present, Kumar. ma'am. Okay. Abhay Kumar. Present, ma'am. Abhay Kumar. Okay. Mithilesh Kumar Dubey. Present, ma'am. Okay. Abhishek Kumar. Present. Present, ma'am. Abhishek Kumar. Okay. Karthik MP. Karthik. Sumit Bhati. Sumit Bhati. Akshat Mishra. Akshat Mishra. Yes, ma'am. Adarsh. Akshat is present. Yes, ma'am. Adarsh Raj. Adarsh Raj. Serena. Present, ma'am. Aditya Raj. Yes, ma'am. Okay. Kriti Gupta. Present, ma'am. Okay. Paramjeet. Present, ma'am. Okay. Abhishek Singh. Present, ma'am. Okay. Akash Aman. Present, ma'am. Okay. Mohsin Rashid. Present, ma'am. Okay. Himanshu Upadhyay. Present, ma'am. Okay. Lucky Jaiswal. Present, ma'am. Shilpa Kumari. Present, ma'am. Okay. Deepak Kumar. Present, ma'am. Kunal Bansal. Present, ma'am. Okay. Abhay Arjun. Present, ma'am. Okay. Shubhi Agarwal. Present, ma'am. Okay. Abhishek Sen. Abhishek Sen. Present, Okay. ma'am. Okay. Priyanshi. Present, ma'am. Okay. So you can leave this meeting. Ma'am, Priyanshi Moria present. Just tell your enrollment number. 8001. 8001. 8063, ma'am. Ma'am, Yes. 714. Ma'am, 8005. Just speak one by one. जब आपका नाम लेते हैं तब तो आप बोलते नहीं अटेंडेंस के लिए, एंड में सब लोग just speak one by one. Ma'am, 800. Ma'am, sorry. 8001 I have marked. Ma'am, Priyanshi. Ma'am, 8031. 8031. 8014. Ma'am, 8014. Present, one. 8014. सब फिर एक साथ बोल रहे हैं. I want mark the attendance. 8014. Yes, ma'am. 8024. 8024. 8024. 8063. Doreen. 8063. 8063. Ma'am, 7146. Ma'am, 8131. Nishat.
सारे के सारे अभी आ रहे हैं, जब नाम बोलते हैं तब कोई नहीं बोलता है। ठीक है, निशत अफजा हो गया आपका। मैम 81148। डोंट स्पीक इन बिटवीन। प्रियांशी मौर्य आपका हो गया है। 8002। स्वाति सिंह। 8002। 8003 मैम। 8002 यामिनी शर्मा। 151 Abhishek. Yes, ma'am. Yamini Sharma is there. Yes, ma'am. मैम 8157. 800। अच्छा, मैं सबके नाम बोल रही हूँ जो एब्सेंट हैं, देन यू स्पीक आउट। प्रणत कुमार इज देयर। प्रणत कुमार। कुमार उत्सव। Present, ma'am. ओके। स्वाति सिंह। प्रेजेंट मैम। ओके। मायसन सिंह। मायसन सिंह। अमृताभा दत्ता। आयुष राज। आयुष राज। प्रेरणा शांडिल्य। यस मैम। ओके, जिनकी अटेंडेंस लग चुकी है दे कैन जस्ट लीव दिस मीटिंग। गोल्डी कुमारी। यस मैम। ओके। अभिनंदन। अभिनंदन is there? No. Nikita Chaudhary. Nikita Chaudhary. बलवंत कुमार। विशाल विजय। निकिता भारद्वाज। सूर्य प्रताप सिंह। कुणाल चौधरी। मेघा सिंह। Yes, ma'am. Kunal present. Okay, Kunal. Megha Singh is there. Yes, ma'am. Okay, Anjali Mishra. Anjali Mishra. Laiba Khan. Yes, ma'am. Okay, Menka Shandilya. Present, ma'am. Okay. Noria, sorry. Noria is there. Avantika. Avantika is there. Manish Kumar. Yes, ma'am. Tanishq Pratap Singh. Tanishq Pratap Singh. Abhishek. Present. प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार। आलोक कुमार। Yes, ma'am. तनिष्क गुप्ता। तनिष्क गुप्ता। रविशंकर। Yes, ma'am. Ravi Shankar. ओके। अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार। कार्तिक एमपी। कार्तिक। सुमित भाटी। Sumit Bhatti present, ma'am. Present, आदर्श ma'am. राज। आदर्श राज। आदर्श राज। Okay, students, you guys. Sumit.